Good morning and welcome back. We always talk about the favorites. Who is the favorite of the country, of the establishment? And truth be told, I'll say very frankly, it's neither Nawaz, nor Zardari, nor Imran Khan. Because ये लोग तो शायद 2-3 दफ़ा या 4 दफ़ा आए होंगे. बट अगर कोई एक ऐसा फेवरेट हमारे मुल्क में है जो ज़्यादा आया है इनसे, वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और द IMF. 2019 के अंदर जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने 22nd अपना प्लान शुरू किया था IMF के साथ. दिस वाज कॉल्ड द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और एज इट्स नोन एज द EFF. It started back in 2019 and it was stopped halfway through. उसके बाद इसको रिवाइव करने का प्लान किया गया था 2021 के अंदर और काफ़ी हार्श रिस्ट्रिक्शंस सामने आई थी क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को बेहतर करना था. रेवेन्यूज़ जितने कहे गए थे उतने नहीं थे और शॉर्टफॉल था. इररिस्पेक्टिव लोग आपको क्या कहते हैं. दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी कीप ऑन कंटिन्यूइंग टू गो टू IMF बिकॉज हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो बार बार डिस्टर्ब होता है. हमारे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं हमारी मीन्स से. हम लोग इतना एक्सपोर्ट कर पाते नहीं हैं और हम लोग इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी एग्जिस्ट करते हैं. 2018 में गवर्नमेंट आई थी. दे हैड अ प्लान कि हम लोगों ने इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी को ख़त्म करना है आहिस्ता आहिस्ता. जो हमारे इम्पोर्टेड रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं उन पर हम लोगों ने डिपेंडेंसी कम करनी है एंड लोकलाइजेशन की तरफ मूव करना है. सो द 8 न्यू बेंचमार्क्स विच हैव बीन गिवन टू अस, उसमें से एक फैक्टर है जो मेजर कॉस्ट फैक्टर है. दैट इज फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट. एंड येस, इट इज गोइंग टू हर्ट अस रियली रियली हार्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी चीज़ों को अगर आप देखेंगे यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज कि वो कितनी बेहतर है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों ने अपने एक इंक्रीज करना है और री एनुअल बेसिंग करनी है फॉर द फ्यूल प्राइसेस which go into the NEPRA as well. And हमारी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो क्रिएट की जाती है फॉर यूटिलिटीज एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोगों ने दिसंबर 2021 से लेके अक्टूबर 2022 तक लेके आके उसकी एनुअल रीबेसिंग करनी है. दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन ट्राइंग टू कैलकुलेट कि हमारी एक्चुअल प्राइसिंग क्या एग्जिस्ट करती है. एंड वी शुड नॉट बी फॉलोइंग द रीबेसिंग ऑफ प्रीवियस ईयर्स. The second, which is a very, very important factor, is going to help the underprivileged people of Pakistan, is that the Benazir Income Support Program should be enhanced to 9 million people. इसकी इंफॉर्मेशन सारी नादरा से रिकवर की जाएगी और जो भी करंट कंज्यूमर्स हैं BISP प्रोग्राम के हैव टू बी इंक्रीज टू 9 मिलियन. थोड़ा सा उनकी जो लाइवलीहुड है उसको बेहतर करने की तरफ लेके जाएंगे हम. एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड पॉइंट इज द फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करना है और उसको एग्जीक्यूट करवाना है सो दैट वी आर एबल टू कैलकुलेट कि क्वार्टरली बेसिस पे हमारी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस जो हैं स्पेशली क्रूड ऑयल प्राइस इज गेटिंग डाउन ऑन अ डेली बेसिस. केम डाउन टू 110, then it came down to 100. Recently it was at 90 and a few days back it even went below 90 because of global recessionary impacts. The fourth is the adoption of strategies and frameworks to manage with crisis management and also incorporate further international best practices. Now, the IMF keeps on saying that international best practices adopt karte rahe, but the past 2-3 years have brought a new whirlwind of international good practices, especially after Corona. इसमें global supply chain shortages को mitigate और manage करना है साथ साथ और best practices create करनी है so that we can reduce our dependencies on certain factors and mitigate them pre-hand. So these things will actually bring about a positive change in our country, in our strategy, and in our management, जो governance के अंदर play करती है. The fifth point relates to the Ministry of Commerce, State Bank of Pakistan, and that is the undercapitalization of 2 private banks, namely Summit and Silk Bank. इनकी undercapitalization की वजह से IMF ने request की है कि either we have to restructure them in a major way or preferably liquidate them. So either कोई इसका मर्जर हो सकेगा या इनकी लिक्विडेशन की जाएगी. बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको रिसेंटली डिस्कस भी किया गया न्यूज़ के अंदर कि IMF की सीरियस कंसिडरेशंस हैं कि इनको एड्रेस किया जाए इमीडिएटली. द सिक्स्थ पॉइंट इज समथिंग व्हिच रिलेट्स टू कमर्शियल बैंक्स एंड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज वेल. और वो ये है रिगार्डिंग द NPL स्टेटस, द नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जिनका एक रेशियो निकलता है बैंक्स के अंदर एंड दे ऑलवेज इन्फॉर्म इन देयर क्वार्टरली, सेमी एनुअल एंड एनुअल रिपोर्ट्स कि SMEs या LSMs का कितना नॉन परफॉर्मिंग लोन स्टेटस एग्जिस्ट करता है. What the IMF is saying right now is that we need to reduce the NPLs in commercial banks कि इसका स्टेटस कम हो और इसकी वजह से जो सर्टन एक
लूप होल्स एग्जिस्ट कर जाते हैं या फिर एक सर्टेन एरिया आ जाता है जहाँ पे आपके एनपीएल स्टेटस बढ़ जाता है, उसको रिड्यूस किया जाए। फर्दर ऑफ जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनको राइट ऑफ भी किया जाए। सो दीज थिंग्स विल अलाइन द कमर्शियल बैंक्स in a realistic picture. Point number 7 is that the IMF states that the Ministry of Finance should have a central monitoring unit to observe further the actions taken by the Ministry of Finance, the actions taken by the State Bank of Pakistan, inflation rates कहाँ जा रही हैं, forecasting कहाँ पे जा रही है, हम लोगों को क्या structural changes करने पड़ सकते हैं in the near future or the long term future. So that the Ministry of Finance also has a unit in itself which is monitoring, gathering information and making key information indicators, जिससे हम लोग कल progressively कुछ decisions ले सकेंगे. And point number 8, the IMF requests that an anti-corruption framework should be organized, which includes the National Accountability or NAB's systems and structures as well. And most importantly, that this framework should be independently checked by third-party experts so that a corruption-free mechanism can be created in Pakistan. You must have noticed, you must have read about it, that the corruption perception index in Pakistan has been increasing in the past 4 years, despite whatever the politics say today. The reality is, corruption has increased, it hasn't decreased. So when you look at the IMF's 8 structural benchmarks and a crux, you realize कि इनमें से 1-2 points ऐसे हैं जो हम लोगों को hit करेंगे in terms of costs and our living standards. But जो बाकी remaining 6 points हैं, they are for the betterment of society, the betterment of our governance structure, the betterment of our management in Pakistan. These things, if timely implemented, will greatly improve upon our performance. So it's very, very imperative for us to understand and us to also request and influence and encourage the government कि ये जो 8 benchmarks हैं इनको follow किया जाए so that we move towards the successful execution of the IMF program. Let's hope for a better future, a better Pakistan. Until next time.